अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हम सबको शर शैतान से महफूज फरमाए और मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। तो मेरी आज की ये वीडियो अकाउंटिंग पार्ट 1 के गेस्ट पेपर से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर्स बताऊंगा। इसमें मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताऊंगा। अगर आप इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप 60 में से 60 मार्क्स इजीली गेन कर लेंगे, और अगर आप इन डेफिनेशंस को भी कर लेंगे तो आप इंशाल्लाह 100% मार्क्स यानी कि 100 में से 100 मार्क्स इजीली ले लेंगे। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे तालीमी राब्ता चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होने वाला है। जैसा कि 9-10 फॉलो के लिए मुफीद साबित हो चुका है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी साबित होगा। तो बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताऊंगा, और आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, और कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन कौन सी एंट्रीज करनी है, वही आपको बताऊंगा। आपने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को और उन्हीं एंट्रीज को करना है। इंशाल्लाह आपके उन्हीं एंट्रीज में से ही क्वेश्चंस आएंगे, और ये वीडियो पंजाब बोर्ड्स के तमाम स्टूडेंट के लिए है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं हमारे पास डिफाइन बुक कीपिंग, व्हाट आर मर्चेंडाइज, define bookkeeping, what are merchandise, what is debit balance, what is bank overdraft, what is credit balance, define cash book, what is discount। तो ये स्टूडेंट इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट किए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आप उनको देख लीजिएगा। व्हाट इज डिस्काउंट, डिफाइन डिसऑनर्ड चेक, डिफाइन जर्नल, डिफाइन ट्रांजैक्शन, डिफाइन कैश बुक, डिफाइन ग्रॉस प्रॉफिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बुक अकाउंट, revenue expenditure, depreciation, what is meant by unpaid check, what is meant by error of omission, define voucher, credit sale, purchase return, discount, drawing, real accounts, narration, ledger, trial balance, trade, bill of exchange, डेज ऑफ ग्रेस इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता भी होना चाहिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये अक्सर पूछा जाता है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता है। व्हाट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, व्हाट आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट इज कैपिटल पेमेंट, व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, डिफाइन ग्रॉस प्रॉफिट, व्हाट इज मीन्ड बाय पोस्टिंग, डिफाइन ट्रांजैक्शन, डिफाइन नरेशन, व्हाट इज बुक कीपिंग, डिफाइन सेल्स रिटर्न बुक, what is credit balance, define cash book, what is discount, define book account, define voucher, what is meant by unpaid check, define days of grace, define revenue expenditure, what is meant by error of omission, define depreciation, define bookkeeping, what are merchandise, define nominal account, define journal, what is debit balance, what is credit balance, define trial balance, define dishonored check, what is bank overdraft, define purchase journal, define bank charges, define bad debt, define gross profit, define capital expenditure, outstanding expense, error of omission, bookkeeping, return outward, return inward, creditors, debtors, real accounts, trade discount, what is meant by ledger folio, define manufacturing business, account, transaction, cash book, sales book, what is meant by petty cash book, kind of cash book, commercial bank, what is check, what is bill of exchange, what is bill of exchange, dishonor, side bill, days of grace, name parties involved in a bill of exchange, capital profit, revenue loss, what are errors of omission, examples of error of principal, what is suspense account, what are direct expenses, what are indirect expenses, define profit and loss account, what are fixed assets, what are wasting assets, define business, define voucher, what is transaction, define journal, what are real estate, what is simple entry, define double entry system, define ledger, what is trial balance, what is meant by gross profit, define indirect expenses, define credit sale, what is meant by term bankrupt, define bank statement, what is meant by check dishonor, define bill of exchange, gross check of accounting cycle, define owner's equity, what is trading account, define net profit, what are direct expenses, define unearned income,
Adjusting entry for outstanding wages, define capital receipt, define deferred revenue expenditure, define error of omission, what is meant by error of costing, write short answers, ये हमें आ गया है, define bookkeeping, define proprietor, write down accounting equation, define accounting cycle, what is sale, define compound entry, define journal folio. मैं स्टूडेंट थक गया हूँ, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन. असल में वीडियो शॉर्ट बनाने के लिए मुझे तेज तेज पढ़ना पड़ रहा है. डिफाइन पाई, व्हाट इज प्रोमाइजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जितने क्वेश्चन है वो कर लीजिएगा. तो पार्टीज पाई, ड्रॉयर, ड्राई, डेज ऑफ ग्रेस, डिसऑनर, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ये आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से. ये स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं. आपने इन्हीं क्वेश्चंस को करना है और इन्हीं एंट्रीज को करना है आप लोगों ने. मस्ट प्रिपेयर दीज जर्नल एंट्रीज फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन आप कर लें अच्छे तरीके से. जर्नल एज ट्रायल बैलेंस को कर लें. जर्नल के लिए आपने जो एंट्रीज करनी है वो ये है आपके पास, आप देख सकते हैं. जर्नलाइज द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज एंड पास द या पोस्ट द जर्नल एंट्रीज इनटू ट्रायल बैलेंस, सॉरी इन लेजर्स एंड आल्सो मेक अ ट्रायल बैलेंस. आपने इन एंट्रीज को अच्छे तरीके से कर लेना है. इन्हीं एंट्रीज में से ही आएंगे क्वेश्चन. जर्नल की जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज थी वो मैंने आपको यहाँ लिख के दे दिए. चैप्टर नंबर 2 की अगर बात करें यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्वेश्चन नंबर 2, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आता है. जर्नल का भी लाजमी पूछा जाता है. जरूरी नहीं कि वो जर्नल एज ट्रायल बैलेंस तीनों पूछे. अगर आपको एंट्रीज ज्यादा दे देंगे तो सिर्फ आपने जर्नल बनाना होगा. अगर एंट्रीज 2-3 होंगी तो आपको तीनों चीजें करनी पड़ेंगी. ट्रायल बैलेंस, जर्नल एज, सारा कुछ बनाना पड़ेगा. बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज आप देख लें, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है. ये कोई 8-10 एंट्रीज है, आपने इनको अगर कर ली अच्छे तरीके से, इन पे कमांड हासिल कर ली तो आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी इजीली कर लेंगे और 20 में से 20 मार्क्स ले लेंगे. अक्सर स्टूडेंट ये अटेम्प्ट नहीं करते क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट थोड़े से मुश्किल हैं. क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. इस चैप्टर में से एग्जांपल्स भी पूछी जाती हैं और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल के लिए, तो आप इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा. एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल फंडामेंटल, एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ कास्टिंग, तो इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है. ठीक है, आप डेफिनेशंस अगर कर लेंगे तो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन इजीली हो जाएगा. और सस्पेंस अकाउंट को भी देख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें आपने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आता है अक्सर. पासबुक का आपको बैलेंस दिया जाता है, कैश बुक का बैलेंस भी बाज दफा दे दिया जाता है. एक बैलेंस दिया जाता है, दूसरा आपने फाइंड करना होता है. अगर पासबुक दे दिया जाए तो कैश बुक फाइंड करना पड़ता है, कैश बुक दे दिया जाए तो पासबुक फाइंड करना पड़ता है. फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, रॉन्गली डेबिटेड, रॉन्गली क्रेडिटेड, अनकलेक्टेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक, प्रेजेंटेड चेक, कलेक्टेड चेक. अब कौन सा ऐड होगा कौन सा लेस होगा ये आपको पता है. इन एंट्रीज को आपने अच्छे तरीके से कर लेना और इसी चैप्टर में आपने ट्रिपल कॉलम कैश बुक को देख लेना अच्छे तरीके से. क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि फाइनल अकाउंट को अगर देखा जाए वो भी पेपर में अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो फाइनल अकाउंट में आपने एडजस्टिंग एंट्रीज भी देख लेनी है, आपने अच्छे तरीके से करना है. ये भी क्वेश्चन आ जाता है. और नेक्स्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है. तो डियर स्टूडेंट, ये 5 क्वेश्चन हैं लॉन्ग के लिए, आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेना है. तो आप देख लें, आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जर्नल कर लें, उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर लें और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कर लें. इनकी एंट्रीज को आप अच्छे तरीके से देख लें. यही क्वेश्चंस आपसे इंशाल्लाह पूछे जाएंगे. दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज, टेक केयर.